Okay, students, today we will start this our JEE advanced problem in physics. So I have done this for you. तो मैंने आपके लिए करके रखा है, तो इसमें सारा डिटेल दिया है. यू कैन सी इट इन माय पोस्ट. मैं इसको अपलोड करूँगा इन द पोस्ट इन द यूट्यूब, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं. बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट वेरी क्विकली हियर. थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बी हियर. आप इसको थोड़ा देख लीजिए. सो जेई एडवांस्ड प्रॉब्लम हमारा है, फिजिक्स का प्रॉब्लम है. वी आर गिविंग 3 पार्टिकल्स ऑफ गिवन मास एंड चार्ज आर शोन इन द फिगर. सो आप देख लीजिए, वी हैव 3 पार्टिकल्स, पार्टिकल 1, 2 एंड 3. द मास ऑफ पार्टिकल 1 इज m एंड चार्ज ऑन इट इज़ q. दूसरे पार्टिकल का मास हमारा दिया गया है 2m एंड चार्ज इज़ q ऑल्सो. और यहाँ पे हमारा तीसरा पार्टिकल का मास दिया है 5m एंड चार्ज इज़ twice q. तो what is the are released simultaneously? Okay, that is a genuine question, because if you are not holding them, अगर आप उनको होल्ड नहीं करके रखे होंगे, then there will be a force of, क्योंकि सारे पे चार्ज सेम है, whether it is a positive or negative, we are not concerned about it, but since the charge is same, तो ये रिपल करेंगे, इसलिए हमें होल्ड करना है. ये होल्ड किए हुए हैं, एंड वंस वी हैव रिलीज दैट होल्ड, कैसे भी किया हुआ, चाहे स्ट्रिंग से थ्रू किया है, हाथ से पकड़ा हुआ है, वंस वी हैव रिलीज फोर्स जो इन पे होगा, उसकी वजह से इनमें एक्सेलरेशन होगा, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी. तो क्वेश्चन हमसे पूछता है, हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल फाइंड करना है व्हेन दे आर फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो इसका मतलब ये है कि जब ये बहुत दूर चले जाएंगे, दैट मीन्स इनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो बहुत कम होगा, दैट मीन्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा. दे आर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बिकॉज हमारा फोर्स, एज यू नो बाई कूलम्स लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर. सो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, तो बाई द स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस फोर्स रिड्यूस हो रहा है. सो व्हेन दे आर फार अपार्ट, इट विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बट देयर विल बी फोर्स, बट वी विल अज्यूम दैट फोर्स इज नेग्लिजिबल. तो उस टाइम हमें इनका काइनेटिक एनर्जी निकालना है, दैट इज व्हेन दे आर फार अपार्ट. सो इस क्वेश्चन को नॉर्मली स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, व्हाट दे डू, दे स्टार्ट विद द फोर्स इक्वेशंस. इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पर कितना फोर्स लगेगा, दैट इज़ द नॉर्मल वे बाय द स्टूडेंट. तो थोड़ा सा वो फंस जाता है, क्योंकि उधर से इनको इंसाइट नहीं मिलती. तो हमें चूँकि बोला गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 पार्टिकल्स निकालो व्हेन दे आर फार अपार्ट, सो वी विल अज्यूम, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द वेलोसिटी. वो हमें पता है, when the particle is moving, only then it will have a kinetic energy. When some particle is moving, it will have a velocity. तो हम पहले बोलेंगे, the question is asking for to find the kinetic of each particle when they are far apart. So हम क्या करेंगे, हम इन तीनों पार्टिकल्स का वेलोसिटी एज्यूम करेंगे. किसी डायरेक्शन अभी हम बता सकते हैं, अभी भी बताएंगे कि डायरेक्शन का क्या होगा वेलोसिटी का. लेट द वेलोसिटीज बी v1, v2 एंड v3 ऑफ ईच पार्टिकल. तो हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स और सिस्टम विल बी 1/2 ऑफ mv1 स्क्वायर. और चूँकि इसका दूसरे पार्टिकल का मास 2m है, सो एज यू नो दैट देयर इज 2m, सो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 ऑफ 2m इंटू v2 स्क्वायर एंड 1/2 ऑफ, और तीसरे पार्टिकल का मास 5m है, सो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 ऑफ 5m. लेट अस से इट्स वेलोसिटी इज v3. अभी हमने इनको वेलोसिटीज दी v1, v2, v3. तो दिस इज़ अ बेसिक थिंग जो हम कर सकते हैं. अब हमें अगर इन तीनों का वेलोसिटीज पता हो जाए, तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ तीनों पार्टिकल्स का निकाल सकते हैं. और हमें वेलोसिटीज किन टर्म्स में चाहिए, हमें दिया क्या है, इन टर्म्स ऑफ मासेस, इन टर्म्स ऑफ चार्जेस, इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस, जो बेसिक इनिशियल. दिस इज आवर क्वेश्चन. तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है. तो हमने इनको अज्यूम किया वेलोसिटीज v1, v2 एंड v3. तो अब क्वेश्चन है, ये काइनेटिक एनर्जी, चूँकि हम कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स तो हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं सिस्टम में, तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ जाएगी, वेयर फ्रॉम दिस काइनेटिक एनर्जी विल कम. काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ जाएगी, एंड दैट इज़ क्लियर. सिंस हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, द काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम इटसेल्फ. देयर वुड बी सम डिक्रीज इन काइनेटिक, इफ देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी आ रही है, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, देयर विल बी सम एनर्जी, जो सिस्टम का कुछ एनर्जी होगा वो डिक्रीज होगा, एंड दैट विल बी द, सो दिस ऑल काइनेटिक एनर्जी विल बी कमिंग फ्रॉम द, ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे. सो वी विल कैलकुलेट व्हाट वाज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली. तो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो चार्ज Q, दिस इज अ सेपरेशन. तो पोटेंशियल एनर्जी चूँकि आपको पता है, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन आप कैलकुलेट करेंगे.
तो वो तो ईजी है, वो तो आप जानते ही होंगे बिकॉज यू आर डूइंग एडवांस लेवल क्वेश्चन, मुझे आई होप दिस इज यू नो. तो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी दिस के क्यू स्क्वायर बाय आर प्लस के 2q square by r plus k into 2q square by 2r. If you calculate it, this will be the potential energy of this system. So this first thing is what we got. This was the initial potential energy when our particles were far apart and we assumed their velocities as v1, v2 and v3. So we will assume this, right, by taking this assumption they are far apart. This all of the potential energy of the system will go into the kinetic energy. So we will equate this kinetic energy of the system to the potential. Still, let us say this is a one equation which relates three velocities to something. So we have three velocities, there is a relationship, then it is relating it to the, here it should be 4, sorry, so there it should be 4 kq square by r. Okay, so this is one of the things. Now our aim is to reach, we have to get something between v1, v2 and v3. If we get a relationship between v1, v2 and v3, we can get a relationship between the kinetic energy, or we can calculate the kinetic. This is our aim. So this thing we are done. We know that we cannot move ahead about it because we know the total kinetic energy will be now equal to this when they are far apart. It will be equal to the potential energy of the system because all of the potential energy जो system की है वो गई होगी kinetic energy. अब चलते हैं आगे. तो दूसरा चीज़ जो हमारे पास जो होता है, हमें पता है कि सिस्टम इट वाज इनिशियली एट रेस्ट, जो ये सिस्टम था इट वाज इनिशियली एट रेस्ट. सो इसका मतलब है कि मोमेंटम इसका, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एनी वेलोसिटी, इसका मोमेंटम जीरो था. एंड एज आई टोल्ड यू वी हैव नो एक्सटर्नल फोर्स, सो इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा. अब मोमेंटम के लिए हमारा सबसे बड़ा चीज़ हो गया, क्योंकि एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, वी आर नॉट वरीड अबाउट व्हाट द वेलोसिटीज विल बी, बिकॉज जो ये एनर्जी इक्वेशन में है दीज विल बी ऑल ओनली मैग्नीट्यूड्स. So we were not concerned about the direction. Now हमारे पास क्वेश्चन आता है, अगर हम मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, we need the direction. हमने तो वेलोसिटी assume की, we need the direction of the velocity. Now देखिए यहाँ पे, look at this particle 1. It will be acted by the force, from the particle 2 and particle 3. Both will be repulsive and that will be towards the left. But particle 2 को कुछ force towards the left होगा और towards the right होगा. Left ज़्यादा होगा because the charge is 2q, because since the distance is same from both the particles, तो left वाला force ज़्यादा होगा और right वाला force due to the charge 1 it will be less, almost it will be half, because the charge is half of the charge on the left. So हमारा नेट फोर्स इसका भी, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा होगा ये फोर्स कम होगा, हमारा नेट फोर्स इस पे भी towards the left होगा. But on the particle 3 it will be towards the right. Or if we have a coordinate system, we will say that if the particle 3 will meet towards the positive x-axis, and particle 2 and particle 1 will move in the direction of negative x-axis. So if we assume that the direction in the positive x-axis to be positive and the directions in the negative axis to be negative, or direction in towards the right as positive and the directions towards the left as negative, so we can say that V3 is positive and V1 and V2 are negative, and we can apply our conservation of momentum equation here. So because the mass is 5m, 2m and m, so our conservation of momentum, because we are taking the direction towards the right as positive, so this will be positive, this will be negative, so m will go. So we will have, this is the second relationship. Now we are caught. We have all two equations, but we have three unknowns: v1, v2 and v3. So we have to calculate. So there should be some third condition which should be relating these any of these two. So ये इस क्वेश्चन का कैचिंग पॉइंट है. यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा फंस जाता है. अब मैं क्या करूँ, मैंने तो ये इक्वेशन लिखी, फोर्स इक्वेशन, तो या तो मुझे वेलोसिटीज़ का, तो इसमें क्या है, तो वी विल कैलकुलेट, देखते हैं कैसे हम जाते हैं. वी विल कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ईच पार्टिकल, F1 बाई कूलम्स लॉ, सिंपल, F2 बाई द कूलम्स लॉ थर्ड. तो फोर्स तो हमें कुछ नहीं बताता है. लेट अस सी द एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वही स्टेप है, हम रिवर्स करके फोर्स पता करेंगे, एक्सेलरेशन करेंगे, एंड देन वी विल सी कैन वी रीच टू समथिंग
on the velocity. तो acceleration is force F1 by m, इसका mass m है तो ये आ गया. A2 पे acceleration का F2, इसका mass 2m है तो F2 is from here formula. So we got this. और F3 we got 5. Here is the catch. You see kq square divided by 2m square, acceleration of particle 2 is same as acceleration of particle 1. ये इस question का सबसे बड़ा ही observation है. If you can observe such things in your questions, you can do these questions very easily. वहाँ तक तो सब करेंगे because that is the fundamental approach. लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को analyze करना, it is in the question paper. इसके लिए आपको you should see every term minutely. So look at this term. This is equal to this. That means acceleration of particle 2 is equal to acceleration of particle 3. By that means at every instant of time, the velocity of particle, magnitude of the velocity of particle 2 will be equal to the magnitude of the velocity of the particle 3. Okay? Because directions इनका defined हुआ है, वो opposite है, वो हमें पता है. particle 2 और particle 3 जो हमारा move कर रहा है, particle 2 is moving towards the left and particle 3. So we can say that magnitude of particle acceleration is equal. So magnitude of particle 2 is equal to velocity of magnitude of particle 2. Magnitude of velocity of particle 2 and particle 3 will be same, but direction is different. So we can say that magnitude of v2 is equal to magnitude. Let us say it is v. So substituting in our momentum equation, so we can have this. This we can substitute v2 and v3 since they are same. We can substitute them as v. Direction का हमने ख्याल रखा because here it is a minus. So what we get, finally we get a relationship. We know that now we are getting a relationship. v1 is equal to v2 and in magnitude, and v3 जब हमने इसमें put किया, so we get that v2 is equal to v3 and we get, which is we put as v, so we हमें v1 भी मिला 3v. So that is all. This is what we needed. आप देख लीजिए because this is this, so it will be v. So हमारा 3v1 square. So अगर हम इसको अब थोड़ा सा और करेंगे, we get everything in the v, so we get v square equal to, you can see that we get v square is equal to kq square divided by 2m. So we can say that kinetic energy of the particle 1, which is m1 v1 square, and we know that v1 square is thrice v. So we put here, we get the value of v square, so we get this. For that it is just a math. So what I am trying to say, if you do such questions, try to do them in the fundamental way, move ahead, आगे चलो आप with something where you can get the relationship and observe the things very minutely. This was the big observation. This is the observation in this. That is why आप इस question से भी suspect कर रहे हैं why the questioner is giving us the masses of the particles like m, 2m and 5m. उससे मतलब क्या है? Why? तो यहाँ से सस्पेक्ट करना, there should be something. If his charge क्यों है q, and there should be, that means he is trying to, जो ये charges और mass दे रहा है, he is trying to establish a relationship such that ताकि आप question की solution तक पहुँच जाए. Hope this will answer your question. This will, I will also upload in the post the detailed photos of these detailed description of this solution. So you can see उस पर सारा लिखा है. If you cannot get it here, you can see easily and you can read that. I hope this will answer. JEE Advanced के लिए बहुत अच्छा problem है, even mains के लिए बहुत अच्छा problem है.